गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल। गणित की दुनिया में आपका स्वागत है। दीज डेज वी पीपल आर डूइंग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। Under this we are doing द रिंग वलय। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। टुडे इज द फोर्थ वीडियो ऑन द टॉपिक रिंग इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। रिंग मीन्स ट्रिपल। अब तक आपको याद हो गया होगा, ट्रिपल मीन्स नॉन एम्प्टी सेट। बाइनरी compositions. A triple is called a ring, or a triple forms a ring if first, as usual, you people know that, is an abelian group. Second is a semigroup, and third is distributivity. बंटनता। So triple forms a ring if, with respect to the binary composition denoted by plus, this is an abelian group. With respect to the second composition, this is a semigroup, and the linking between these two operations, that is distributivity. Bantanta. Multiplication is distributive over the addition. This I have already explained. मैंने कल आपको बताया था कि ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है R प्लस, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है प्रॉपर्टीज की। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी, इनवर्स हो गया मीन्स एडिटिव इनवर्स, और कम्यूटेटिव हो गया है। सो दिस इज ओवर। Third, this is the connection between these two compositions, that is known as distributive property. That is finished. गुंजाइश कहाँ है? गुंजाइश हमारे पास में इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी में, यहाँ इसके अंदर गुंजाइश है। This is semi group under this composition. ध्यान रखना है, this is plus, this is dot means into multiplication, but sometimes it is not necessary that it is the ordinary addition and this is the ordinary multiplication. नंबर्स है, डेफिनेटली हम नंबर्स में इसको प्लस और इसको मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। एडिशन मॉडल भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडल भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कल बताया था। अब क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करते जाएंगे और इस रिंग का नाम बदलते जाएंगे। सो मिनिमम पार्ट इज दिस वन। So if the non-empty set, again I repeat, if the non-empty set R together with two binary compositions denoted by plus and dot satisfies these three, then this triple or this system or this structure is known as
the ring. Okay, so let us continue. Yesterday we took the example. If you remember, set of integers, set of rational numbers, set of real numbers, ordinary addition and multiplication, and set of complex numbers. It is this. Then set of matrices I consider, suppose n set of matrices of order 2 by 2 over integers. And we took one more example, that was Z7 0 1 2 3 4 5 6. This one is M addition of matrices, multiplication of matrices. Remember, this is a square matrix of order 2 by 2. In general, we can consider n by n also. This is Z7 0 1 2 3 4 5 6. You can generalize this one. You can write here Zn, that is 0 1 2 3 up to n and so on in general. Operation plus and dot. For this one, I write this, and this one, Z7, I write here. Addition modulo 7, multiplication modulo 7. Similarly for this one, it is just like this. Remember, these are the sets of numbers. This is also the set of numbers, but finite set. This is the set of matrices. We can consider some more examples also. So, this is a ring, this is also a ring, 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 this is also a ring, this is also a ring. Now, you remember one particular property with respect to numbers. Numbers may be integers or decimal or reals or complex or natural numbers, or these numbers also. I am not talking about the elements of this set, means matrices. I am talking about numbers. In lower classes, you people know that addition is always commutative. योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है. योगफल किसका योगफल? संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है. The addition of numbers obey the commutative law. Similarly, संख्याओं का गुणनफल, multiplication of numbers, obey the commutative law. That means एडिशन इज कम्यूटेटिव, योगफल जो है वो क्रम विनिमय होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, बट दिस इज इन नंबर्स. a plus b equals to b plus a and ab equals to b. Remember, this is multiplication, this is addition. लेकिन किसमें मैं बात कर रहा हूँ? नंबर्स के लिए. मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखोगे. एडिशन इज कम्यूटेटिव, डेफिनेटली एडिशन कम्यूटेटिव है तभी ये अबिलिट ग्रुप बना है, नहीं तो नहीं बनेगा. अब हम इस प्रॉपर्टी को लेके इसमें कुछ ऐड करते जाएंगे और इसका नाम जो है वो बदलते जाएंगे, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था. सो लेट अस सी. ओके,
Number one, a ring R is commutative. ध्यान रखना, a ring is commutative. यहाँ केवल रिंग लिखा है. Ring means this one and this one. A ring is commutative. गुंजाइश किसमें? इन सेकंड वाली प्रॉपर्टी में. ये कंप्लीट हो गया है. इसलिए मुझे ध्यान रखना है इस डॉट के लिए, इस ऑपरेशन के लिए. If this composition is commutative, ध्यान रखना यहाँ केवल सेमी ग्रुप है, इसमें केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. So if this composition is commutative, then the ring is called commutative. So a ring is commutative ring if this dot means multiplicative composition is commutative. किसको पकड़ा मैंने? इस डॉट को. इसको यदि बोला कि ये कम्यूटेटिव है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, then the ring is known as commutative ring. That means for all a comma b belongs to R implies AB equals to BA. So a ring is commutative if AB equals to BA for all A comma B belongs to R. ध्यान रखना है A और B के बीच में जो सिंबल है वो डॉट है, मैं नहीं लिख रहा हूं. थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था numbers obey the particular rule. Addition is commutative, means addition of numbers is commutative. Multiplication of numbers is commutative. Addition of numbers is commutative. ये खत्म हो गया यहाँ पर. Addition is commutative. That's why it is abelian group. So here Z plus is abelian, Q plus is abelian, R plus is abelian, C plus is abelian, M plus is abelian. M is set of matrices of order n by n. And addition modulo is abelian group. Now we come to the second one. Z set of numbers and multiplication is commutative. So all these rings are commutative. Multiplication is commutative in Z, Q, R and set of complex numbers. And if you have some idea of complex number, then you remember every number is a complex number. A real number is a complex number if its imaginary part is 0. ध्यान. Okay, so here it is. This one, all are commutative rings. What about N, A, B, C, D? I took the example A, B, C, D belongs to set. This is a set of matrices of order 2 by 2 over the integers. जरूरी है इंटीजर्स हो, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, बट हियर पर्टिकुलर लेट्स A is 1 1 1 1, B are the members of M is a set of matrices, so this is a matrix of order 2 by 2 and members are the integers. Now if we multiply these two AB, then 1 is multiplied by 0, 1 is multiplied by 0, this is multiplied by this, so it is, wait, let us see,
what will happen? If people know that multiplication is not commutative, but I'll show you here. AB. 1 into 0, 0, 1 into 1 plus 1, 1 into 0, then 1 into 0, 1 into 1, this is BA, zero into 1, 0, then again it is 0, 0 into 1, 0 plus 0, here it will be this, 0 into 1, 0, then 0 into 1, then here it is this one, then 1 into 1, so it is 1, then it is plus 1, then 1 plus 1, so it is the 0, 0, 2, this is not equals to this one. You just see the calculation. AB is not equal to BA. So this set means M is a set of matrices of order 2 by 2 over the elements integers. This is not commutative ring. Okay, so I hope you have understood what is the commutative ring. Commutative ring. Okay, next one. Second, a ring R is formed with unity. ध्यान रखना, मेरे पास में इस प्रॉपर्टी के लिए तीन गुंजाइश है और उसी के अकॉर्डिंग मैं नाम दूंगा। पहली गुंजाइश थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी गुंजाइश है इनवर्स, और तीसरी गुंजाइश है आइडेंटिटी। यहां पर भी तो यही हो रहा था, अबेलियन ग्रुप के अंदर क्लोजर था, एसोसिएटिविटी थी, आइडेंटिटी थी, इनवर्स था और कम्यूटेटिव। 5 हो गया। सेकेंड के लिए यहाँ ये सेमी ग्रुप कंप्लीट हो गया, ये रिंग बना दिया। अब मेरे पास में 3 बची प्रॉपर्टी इसके लिए है, तो तीनों प्रॉपर्टी में इसमें लगाता जाऊंगा और नाम बदलता जाऊंगा। यदि ये कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, देन इट इज कम्यूटेटिव रिंग। एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक्सिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम 1 से डिनोट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द यूनिट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट एलिमेंट, इकाई अवयव बोलते हैं इसको, यूनिट एलिमेंट। सो अ रिंग इज कॉल्ड विद यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट, जिस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन लिखते हो वैसे लिखना है। इफ देयर एग्जिस्ट E belongs to R such that EA equals to A equals to AE or all A belongs to R। ध्यान रखना है, यहां पर इन दोनों के बीच में जो सिंबल है वो ये वाला ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन, एडिशन नहीं है। A ring is called with unity if identity exists, ऐसे भी बोल सकते हो। So such that this here
E is called यूनिट एलिमेंट, जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Here A is called unit element and is denoted by 1। यदि मैं मैट्रिक्स के लिए बात करता हूँ, सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, तो वहां जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मींस उसका जो यूनिट एलिमेंट होगा वो यूनिट मैट्रिक्स होगा 1 0 0, इट विल बी दैट। Okay, so a ring is called with unity if identity element exists. So here it is, set of numbers definitely, and this is the multiplication, and you remember if it is an ordinary multiplication then 1 is the multiplicative identity and 1 is the member of this one. So here this one is the ring with unity, ring with unity, ring with unity, ring with unity. So all are these are commutative rings with this is a commutative ring with unity, this is commutative ring with unity, commutative ring with unity, commutative ring with unity, and I also include this. What is this? Zn? This is 0, 1, 2, 3 up to 10 minus 1. What is this? So, set of numbers. So, all are commutative rings with unity. What about this? M? A, B, C, D. A, B, C, D belong to set. This is a ring. This is a ring with unity. But remember, this is not a commutative ring. So it is a ring with unity, but it is not commutative ring. Okay. Commutative ring with addition modulo and multiplication. Okay, दो प्रॉपर्टी हमने इंक्लूड की है, एक आइडेंटिटी और कम्यूटेटिविटी। अब एक और बचा है, that is inverse. Okay, so a ring is known as filled. Very important. A ring is known as filled if it is commutative with the unity. A ring is known as filled if it is commutative with unity and every non-zero element
इनवर्टिबल। खत्म कर दिया मैंने इसको। क्या बोला? A ring is known as filled if it is commutative with unity and every non-zero element is invertible. Means non-zero element has inverse. इसका क्या मतलब हुआ ये ध्यान रखना है। मैंने लिखा है it is commutative with unity and every non-zero element is invertible. ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने यहां लगा दी है। It means abelian group। जैसे ये इसके लिए abelian ग्रुप था, अब मैंने इसको भी abelian ग्रुप बना दिया है। 5 प्रॉपर्टीज में क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, पांचों इसमें इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव के लिए और दोनों की लिंकिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 5 5 10 और 11 properties। Then this ring is known as filled। Remember, it is very very important। I have already written very very important। So प्रॉपर्टीज लिखते गए और काम करते गए। So how to define this triple forms a field if number 1 is an abelian group। Second, this is also an abelian group। And third, distributivity holds left and right। This is a complete system। पूरा हमने कर दिया। What is a ring? It is a triple with a non-empty set and 2 binary composition। With respect to this abelian group and with respect to this semi group and interlinking, that is distributive property। गुंजाइश कहां थी? इसमें कम्यूटेटिव हो जाता है कंपोजिशन तो कम्यूटेटिव रिंग। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, देन रिंग विद यूनिटी। एंड इफ इट इज commutative ring with unity and every non-zero element is invertible, then this system is known as field। So how to define the field? We write the proper definition। This I have already written here। सब कुछ दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्रॉड वे से आपको सोचना है। जैसे मैंने कई बार आपको कहा कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है हलवाई के पास में वो वही रहते हैं, मसाले जो है दूसरे फ्लेवर्स डालते जाओ, मिठाइयों का नाम चेंज करते जाओ। इसलिए हमने सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो सिंगल सेट, दैट इज नॉन एम्प्टी सेट विद 1 बाइनरी कंपोजिशन, और उसको हमने ग्रुप बोला। फिर अबेलियन हुआ तो अबेलियन ग्रुप बोला, 2 बाइनरी कंपोजिशन, देन इट फॉर्म्स अ रिंग। व्हाट विल हैपन? कम्यूटेटिव रिंग। व्हाट विल हैपन? रिंग विद यूनिटी। व्हाट विल हैपन? एंड इट फिल्ड, देन व्हाट विल हैपन? सो लुक एट दिस commutative rings with unity। Remember, every non-zero element is invertible।
every non-zero element is invertible, means multiplicative inverse. Okay, so see. Now my question is, the first one, this does not form of a because z set of integers. This is not filled. With respect to this, remember, because z dot is not a group, ये ग्रुप नहीं है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता, 2 का इनवर्स 1/2 होगा तो इसमें नहीं होगा, सो डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, सो इट डज नॉट फॉर्म ए फील्ड. व्हाट अबाउट दिस? यस, 100%. अगेन दिस सेट हैज 0, लेकिन मैंने लिखा नॉन जीरो एलिमेंट. So Q plus is an abelian group. Q dot is also an abelian group. R plus is an abelian group. R dot is an abelian group. This is abelian. This is abelian. So you can say Q plus R plus क्या है ये? Fields. Q is a field of rational numbers. R is a field of real numbers, and C is a field of complex numbers. I always say play with numbers. अब आपके पास में खुला मैदान है. Play with numbers means addition and multiplication. जो चाहे वो numbers के साथ में कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो. लेकिन कंपोजिशन में ध्यान रखना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही लेना है. ये दोनों कंपोजिशन ऐड करो, मल्टीप्लाई करो. विद रेस्पेक्ट टू दिस abelian, with respect to this abelian, and distributive property holds, then this triple is known as filled. Okay, now we consider some more properties. One more example I consider. See, and this is without, this is non-commutative ring. This is ring with unity. What is the unit element? I denote it by I, that is 1, 0, 0, because it is 2 by 2. So this is ring with unity, this is non-commutative, because matrix multiplication is not for all the numbers, particular one. Let us consider
addition modulo, multiplication modulo, Z5 0 1 2 3 4. Okay, this is a finite set. The best one is to construct a table. Let us complete. Plus 0 1 2 3 4. This is 2 3 4 0 3 4 0 1 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3. 4 plus 4 8. 8 is divided by 5, so remainder is 3. जैसा मैंने कल बताया था. Okay, and here you can see diagonal elements are equidistant from diagonal be equal. So this type of situation 1 1 0 0 4 4 and all that means numbers follow the commutative property. So definitely with respect to in this case 100%. Let us complete this. We multiply this by, so the answer will be 0 everywhere. Here it is also 0 into 0, 1 into 0, all that. Remaining will be right. 1 into 1, 1, 2, 3, 4. Then 2, 4, 2, 3 is 6, 4 2 is 8. यहाँ हमने ऐड किया था, यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है. If the multiplication is 5 or more than 5, then we divide. Okay. Then 3 is multiplied by 1, so the answer is 3. 3 to just 6, 9, and 4, 12, it is 2. Then 0, then it is 4 into 1, 4 to the 8, 12, then 16 and 1. Understood? Unit element, you just leave this 0 and 0. Have a look at this part. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So this coincides with this one. And you remember always, if the operation is multiplication, then 1 is always the identity element. So here identity element source. And similarly, you can see this part. This is the diagonal. So here 2 2, then 3 3, then 4 4. So it is also commutative. लेकिन मैंने आपको बताया था इतना करने की जरूरत भी नहीं है. Numbers, multiplication of numbers is always commutative, and addition of numbers is always commutative. Addition of numbers and multiplication of numbers both be commutative operations. So you can write straightforward. So this is an abelian group. This one, with respect to multiplication, it is commutative. Identity is 1. So the whole system is a ring. Which type of ring? Commutative ring with unity. That means 1 is the unit element here. Is it a field? That we have to think about it. If every non-zero element, again I am telling you, if every non-zero element has inverse, if every non-zero element has inverse, then this forms an abelian group. Okay, so definitely 1 is the identity element, so inverse of 1 is 1. Now inverse of 2, you can see here we found this one, so 2 is multiplied by 3, so it is 2 into 3, that is the answer is 1.
But remember, the operation between this is dot 5. So it is 2 3 is 6. 6 is divided by 5, so the answer is 1. So inverse of 2 is 3 and inverse of 3 is 2. What is the inverse of 4? You can see inverse of 4, so here we find, so it is 4 multiplied by 4, 4 is 6, the answer is 1. Here it is 4. And inverse of 1, definitely inverse of 1 is always 1. Inverse of identity element is the identity element itself. So every non-zero, again I am telling you, again every non-zero, केवल इसकी बात हो रही है, इसके लिए बात नहीं हो रही है. इसमें जीरो का इनवर्स जीरो होगा, इसमें जीरो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या नहीं, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. So every non-zero element has inverse. Inverse of 1 is 1, inverse of 2 is 3, inverse of 3 is 2. Inverse of 4 is 4 itself. So every non-zero element is invertible. So 100% this forms a field. This is a field, okay? But little bit I change this. Wait. I consider Z6, okay? Let us complete. Z6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. I consider multiplication here, okay? Here it is. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, multiplication, so 0, 0, 0, 0, 0. Here I also write 0. Two into 1, 2, 2 to the 4, 6, 4 to the 8, then it is 2, 10, then it is 4. मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करना, 6 से. यदि आंसर 6 या 6 से ज़्यादा हो, then 3 is multiplied by 1, so it is 3 to the 6, 9, then it is 3, and 4 3 is 12, then it is 0, and 5 is 15, then it is 3. 4 is multiplied by this, it is 4 to the 8, so it is 2, 4 3 is 12, 0, and 4 4 is 16, then it is 4, then 4 5 is 20, so 2, 20, 4 5 is 20, 6 3 is 18, 2 remainder, 5, 4 5 is 15, 15, then it is 3, 4 is 20, 20, 20, then 2, and here is 1. Look at this. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. 1 is the multiplicative identity. 1 is the multiplicative identity. 100% होगा, 100% होगा. कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है. So this is a ring. कौन सा रिंग? कम्यूटेटिव रिंग. कम्यूटेटिव रिंग विद commutative ring with unity. This is also commutative ring with unity, but here every non-zero element has inverse. Look at this. Inverse का जो property है वो क्या होना चाहिए? If we compose two elements, then the answer must be the identity.
Here, what is the identity? 1. Inverse of identity element is always the identity itself. So 1 का इनवर्स तो 1 होगा. Look at 2, ये 2 है. 2 को किसी भी एलिमेंट से जो नॉन जीरो है, यहाँ से एलिमेंट्स को ऑपरेट करता हूँ तो इसमें कहीं पर भी 1 नहीं है. आप देखिए यहाँ 1 नहीं आ रहा है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, लेकिन यहाँ जाके 1 आ रहा है. 5 into 5 25 divided by 6 divided by 6, so the remainder is 1 here. So inverse of 5 is 5, inverse of 1, because this is the identity, is 1. But what about the other elements? Inverse of 2 does not exist, inverse of 3 does not exist, inverse of 4 does not exist. So this is a ring with unity only. This is not filled, does not form of field. ये filled नहीं है क्योंकि सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. कम्यूटेटिव है, यूनिटी है, लेकिन एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज नॉट इनवर्टिबल. आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होगा. लकीली हमारे क्लास में 5 मिल गया है, जो कि 5 का इनवर्स 5 है. यू कैन सी हियर. एक और बात नोट करनी है, ये देखो लास्ट एलिमेंट 4 का इनवर्स 4 था, यहाँ 5 का इनवर्स 5 है. ये बहुत बड़ी बात है, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए. ध्यान रखा है यहाँ पर ये 5 है, प्राइम नंबर है. दिस इज नॉट प्राइम नंबर. थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, बुक को पढ़िएगा कि जब ये प्राइम नंबर होता है तो क्या होता है, और जब ये प्राइम नंबर नहीं होता है तो क्या होता है. सो दिस इज अ फील्ड, दिस इज नॉट अ फील्ड. लेकिन एक बात यहाँ पर स्पेशल है जो मैं तुम्हें बताऊंगा. अभी तक जो हमने पढ़ा है कि जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से कम एक नंबर 0 होगा. If product of two non-zero numbers, if product of two numbers, not non-zero, if product of two numbers, whatever, if product of two numbers is 0, then at least one of them must be 0. Means, if AB equals to 0 implies either A equals to 0 or B equals to 0. If product of two numbers is 0, then at least one of them must be 0. If A is not equals to 0, B is not equals to 0, then what is A? बहुत मस्त वाला कॉन्सेप्ट है. A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, दोनों नॉन जीरो नंबर्स है. तो दोनों नॉन जीरो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा. जो ऑर्डिनरी सेट ऑफ नंबर्स थे, इंटीजर्स, रेशनल, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, then this is never equal to 0. If A is not 0, B is not 0, then AB is never equal to 0. But here it is possible. ये ग्रुप थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि जब दो नॉन जीरो नंबर है तो उनका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा. ये बात जो है वो पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो उसका ध्यान रखना है. आपने सेट कौन सा लिया है भाई? आपने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है या सेट ऑफ रेशनल नंबर्स लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया है, या कोई और सेट लिया है?
अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे कि if AB equals to 0 then either A equals to 0 or B equals to 0, and if A is not 0, B is not 0, then AB is never equal to 0. But here it is possible. जरा देखिए, ध्यान से देखिए. This number is 3. This number is 4. Multiplication of 3 and 4 is 0. Here you can see. 3 is not 0. 4 is not 0. But 3 into 4 is equals to 0. लेकिन यहाँ कंपोजिशन जो है वो ये वाला है. This is dot. मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6. यदि ये ऑपरेशन होगा तो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो संभव है. If we have this type of situation, then one of the number is called divisor of zero. Very important concept, जिसको हम कल एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. इससे जब भी आप बात करते हो तो ध्यान रखना कि आप किस रेफरेंस की बात करते हो, कहाँ की बात करते हो, आपका बेस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बात करना है. सो टुडे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, and a very very important concept, that is of field, and the ring with this type of situation and the ring with this type of situation. Okay, so I hope you understood all the things. रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए. जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए. आप कमेंट्स नहीं लिखते हो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है. सो मैं वेट करूँगा. सुरक्षित रहिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, मास्क जरूर लगा के रखिएगा. अभी लॉकडाउन की स्थिति है, घर में रहिए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.